Hello everyone, this is Preetam Shah and welcome to my YouTube channel Cognitive Coders. So today in this PySpark video series we will learn about reduce by key method in Spark RDD. Okay, तो Spark RDD में कैसे reduce by key method का यूज होता है वो आज हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो RDD क्या होता है ऑलरेडी मैंने पिछला वीडियो में बता चुका हूँ. ठीक है, तो अबाउट RDD तो मेरा ये जो अर्लियर वीडियोस है यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि RDD क्या है. प्लीज गो एंड वॉच दैट हाउ टू क्रिएट RDD इन PySpark. ओके, so come back to our today's video. So basically we have one RDD. Okay, I have already created one data frame and using that data I have created one RDD. Okay, तो ये RDD के ऊपर मैं कैसे रिड्यूस बाई की जो मेथड है कैसे अप्लाई करना होता है. ओके, और क्यों अप्लाई करें वो पहले समझते हैं. ठीक है, तो वी हैव वन डेटा सेट लाइक दिस. ओके, तो एप्पल का क्वांटिटी मल्टीपल जगह पे मल्टीपल क्वांटिटी है. ओके, ऑरेंज पे क्वांटिटी भी सेम मल्टीपल जगह के मल्टीपल है. बनाना का भी सेम, मैंगो का भी सेम, मल्टीपल क्वांटिटी का डेटा मल्टीपल जगह पे है. ठीक है, तो इन दिस वे इफ वी हैव द डेटा, so we have the same key in multiple place with multiple quantity. So if we want to get the total quantity of each and every key, in this case what we'll do, in this case we need to sum up the quantity of each and every key. ओके, तो अगर मुझे एक एक की का ये तो एक की है, ये एप्पल एक की है, ऑरेंज एक की है, तो एक एक की का जो क्वांटिटी है उसको टोटल सम अप करके एक एक की का जो टोटल क्वांटिटी आएगा वो हम लोग कैसे निकालेंगे. फॉर दैट केस we need to use in RDD, we need to use this reduce by key. Okay, so reduce by key basically it used to sum up the using reduce by key we can sum up the value of each and every key. Okay, and it will return the value as an RDD also. There we can get our total value of each and every key. Okay, so we will see what it is happening. So RDD न्यू बोल के एक RDD क्रिएट करते हैं. तो बेसिकली RDD डॉट या फिर reduce by key. Reduce by key I will use that. Okay, basically reduce by key I will use there one lambda function. Okay, here I will pass key and value. Okay, so basically our motto will be to sum up the quantity. Okay, now what we will do, RDD new dot collect. If I print this data, you can see earlier it was our data frame was like this. RDD okay, RDD was like this. Now it has, and the each and every key value are sum up, and based on the key it has given the result. Okay, तो ऐसे करके बेसिकली एक एक यूनिक की का जो वैल्यू है उसको सम अप करके रिजल्ट निकालता है ये रिड्यूस बाय की. आई थिंक you have understood the concept. Okay, so if we need to you need to multiply, then just mention it multiply, it will multiply the data. Okay,
So this way it is we used to work with reduce by key method. Okay. So if we want to print the data like this for I in reduce by key. Okay. So each and every element का डेटा हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं if you want. Okay. तो प्रिंट देके बस ऐसे करके लिख क्वांटिटी ऑफ. ओके. उसके बाद स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट करो. उसके बाद आई लिख के I need to pass the first element of the tuple. Okay. After that I want to use one string. Next concatenation once again. Okay, is then directly with as it is in the quantity, it is in integer format. I need to make as a string I then 1. Okay. So I need one gap here. You can see. You can print the data like this also. Okay. तो बेसिकली रिड्यूस बाय की कैसे यूज होता है. रिड्यूस बाय की बेसिकली आरडीडी में ईच एंड एवरी की का वैल्यू को, यूनिक की का वैल्यू को हम लोग सम और एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं एक एक यूनिक की का वैल्यू को लेकर. ठीक है. उसके हिसाब से इसका सम और multiplication any kind of value we can get it. So in this way we can use the reduce by key. I think you have understood the concept. If you like this video, please do like, share and subscribe our channel Cognitive Coders. Okay. For Cognitive Coders I have uploaded lots of videos about PySpark here. Okay. If you think you are aspiring for data engineering role. Okay. So you can start from here. It will be very much helpful for you guys. I can say please support us. You guys support is very much required to grow our channel Cognitive Coders. Okay. These videos are also very much useful. Please share with your friends and colleagues also, so that they also get benefit of this video. These are all free content. You don't need to pay anything to us. Okay. You just please do like, share and subscribe and support us. Okay. Thank you for watching this video. Okay. Bye.